I am Nidhi Srivastava from NIT Pharmacy Institute. So, today I will discuss the lecture number 24 of the Pharmaceutical Organic Chemistry first. The subject code is BP202T. The topic is structure and uses of ethyl alcohol, methyl alcohol, chlorobutanol, cetoestearyl alcohol, benzyl alcohol, glycerol and propylene glycol. These are the examples of the alcohols. In my last lecture, I have discussed about the what is alcohols, types of alcohols, identification test or qualitative test of alcohols. Now, I will discuss the some examples of the alcohol or derivatives of the alcohols, its structure and uses. So, first example is ethyl alcohol, which is very common alcohol and very best example of the alcohol, ethyl alcohol, methyl alcohol. So, the structure of the ethyl alcohol is CH3CH2OH. Okay. Alcohol is made from the alkane when one hydrogen is replaced by the hydroxyl ion and it will be attached with the alkyl group. So, this ROH alkyl alcohol will be formed and this is the general formula of alcohol. Okay. Now, when from the ethane CH3CH3, this is the general formula of ethane. So, from the ethane one hydrogen will be replaced from the hydroxyl ion. So, the ethyl alcohol will be formed like that, CH3 plus OH. So, we can see that one hydrogen will be replaced and CH3 CH2 OH will be formed. Okay. So, this is CH3 CH2 OH. So, this is the structure of OH, ethyl alcohol. This is also called ethanol by the IUPAC name. So, the uses of the ethanol is used extensively as a solvent in the manufacture of varnishes and perfumes. As a preservative, it is used for the biological specimens, in the preparations of essences and flavorings. It is also used as a flavoring agent and for preparations of the essence. In many medicines and drugs as a disinfectant and in tincture, for example, tincture of iodine, the alcohol must be present. Sometimes many type of syrups, medicine like syrup, alcohol is must important because all cough syrups ethanol is present. जितने भी कफ सिरप्स हम यूज़ करते हैं उसमें इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है. जितने कई ड्रग्स होती हैं जिसमें अल्कोहल्स प्रेजेंट होता है. अल्कोहल्स ऑल्सो यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड टिंक्चर ऑफ आयोडीन की तरह भी अल्कोहल यूज़ होता है एज अ टिंक्चर की तरह. एथाइल अल्कोहल जो है बेसिकली यूज एज इन बियर एंड वाइन्स बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज अ ड्रिंकिंग अल्कोहल and as a fuel and gasoline additive, see gasohol. So, alcohols is also used as a fuel and gasoline additive like gasohol. Now, the second is the methyl alcohol. Methyl alcohol is also used as a solvent and it is also best example of the alcohol. Methyl alcohol and ethyl alcohol is the best example. It is also made from the alkane like CH4 methane when one hydroxyl group is replaced from the methane from the alcoholic group. So, the methyl alcohol will be formed CH3OH. This is CH3OH. Okay. So, this is the structure of methyl alcohol.
Now the uses of methyl alcohol, basically methyl alcohol is used as a solvent. Its principal uses are in organic synthesis as a fuel, solvent and antifreeze. So methyl alcohol basically used in the organic synthesis, also used as a fuel and used as a solvent. Sometimes basic use of the methyl alcohol is solvent. Also present antifreeze प्रॉपर्टी इन द मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल एंटीफ्रीज का मतलब जो मिथाइल मिथेनॉल में अगर हम मिथेनॉल को सॉल्वेंट लेके अगर हम किसी कंपाउंड को रखते हैं तो और उसको एंटीफ्रीज रखना है, फ्रीज नहीं होने देना है, तो मिथेनॉल को हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट की तरह. Methanol is a polar liquid at a room temperature. Why it is polar? Because alkyl group and alcoholic group when it will be combined, so it will be polar. ऐसे इथेनॉल भी पोलर होता है दोनों, क्योंकि partially positive और partially negative charge is will be combined, so the compound will be polar and it is in form of liquid. Its state is liquid at a room temperature. It is used as antifreeze, solvent, fuel and as a denaturant for ethanol. It is also used to denature of the ethanol, for the ethanol. The chemical is also used to produce biodiesel via trans-esterification reaction. जो मिथाइल अल्कोहल है, it is used to produce the biodiesel. बायोडीजल किसके लिए? वाया ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू. नाउ द थर्ड इज क्लोरोब्यूटेनॉल. क्लोरोब्यूटेनॉल इज, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक क्लोरो ग्रुप और एक अल्कोहलिक ग्रुप अगर एल्केन में प्रेजेंट है तो सो द कंपाउंड विल बी क्लोरोब्यूटेनॉल. ओके, so in there in this structure chloro group and alcoholic group is present. So and carbon कितने हैं? 1 2 3 4 4 कार्बन तो है, 1 2 3 4, तो द कंपाउंड इज क्लोरोब्यूटेनॉल. ओके, अगर इसकी आईयूपीएसी नेमिंग देंगे तो वो चेंज हो जाएगा. नाउ द यूजेस, इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज. व्हाट इज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी? It is used as a bactericide which is used to kill the bacteria, and antifungal which is used to destroy the fungus, matlab used as a fungicide. So the chlorobutanol is used as a antibacterial and used as a antifungal, और अगर हम इसे include कर दें तो it is used as a antimicrobial agents. Chlorobutanol is typically used as at a concentrations of 0.5%. जो क्लोरोब्यूटेनॉल का सोल्यूशन हम लेते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम 0.5% ही रखते हैं. वेयर इट लेंड्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टू मल्टी इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन. जहाँ इसकी वजह से अगर हम इसकी 0.5% कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं तो इसकी वजह से जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म की होती है टू मल्टी इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशंस के लिए. ठीक है, इट रिटेन्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एट 0.05% इन वाटर. क्लोरोब्यूटेनॉल हैज़ बीन यूज्ड इन एनेस्थेसिया एंड यूथेनेसिया ऑफ invertebrates and fishes. So the chlorobutanol is also used as an anesthetic agent and anesthesia as for the invertebrates and fishes. Now next is structure of the cetoesteryl alcohol. Cetoesteryl alcohol is a polyalcohol. मतलब polyalcohol
कैसे होगा, क्योंकि इसमें कई कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन 14 की चेन प्रेजेंट है सीटोस्टेराइल अल्कोहल में। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो एक ही प्रेजेंट है, देखा जाए तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन इसमें एल्काइल ग्रुप की बहुत लंबी चेन है, तो इसलिए पॉली कार्बन्स में आ जाएगा। वो पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल नहीं होगा, पॉली हाइड्रोक्सी नहीं, पॉली अल्कोहल, क्योंकि पॉली कार्बन की चेन प्रेजेंट है। हम देख रहे हैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और ये 14 कार्बन की चेन प्रेजेंट है, फिर एक मिथाइल ग्रुप 14, 15, 16 कार्बन चेन प्रेजेंट है एंड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। सो पॉली कार्बन की का अल्कोहल हुआ ये। यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज एन इमल्शन स्टेबलाइजर, इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होता है। इमल्शन क्या होते हैं, जो ऑयल वाटर का मिक्सचर होता है, ओपेसिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, और फोम बूस्टिंग सर्फेक्टेंट की तरह यूज़ होता है, एज वेल एज एन एक्वस एंड नॉन एक्वस विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। इट इम्पार्ट्स एन इमोलिएंट फील टू द स्किन and can be used in water in oil emulsion, sometimes oil in water emulsion and anhydrous formulation. So the cetoacetyl alcohol is mostly used for the emulsion, used as an emulsion stabilizer, opacifying agent, foam boosting surfactant, and also used to aqueous and non-aqueous viscosity increasing agent, and in oil water emulsion and water oil emulsion, both in both type of emulsion the cetoacetyl alcohol will be used. The structure of the benzyl alcohol, so this is the aromatic alcohol because it will be attached with the aromatic ring, benzene ring. This is the benzyl alcohol. Benzyl group is present and one carbon is attached with the, this carbon is attached with in their aromatic ring and this their alcoholic group. So this is benzyl alcohol. Uses, benzyl alcohol is a prescription topical for the skin medication, used as an anti-parasite medication. So the benzyl alcohol is used for the skin purpose, ठीक है, for the medication, मतलब skin में for the medication purpose, and it has a anti-parasite activity, so it is used in as an anti-parasite medication. Benzyl alcohol topical is used to treat head lice. Head lice जो हेड में लाइसेस हो जाती हैं हेयर्स में, उसमें भी यूज़ होता है इन पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 6 मंथ एंड 60 ईयर्स ओल्ड, जो पीपल बच्चों मतलब लोगों में 6 मंथ से लेकर 60 ईयर्स के बीच में कभी भी हो सकती हैं। तो बेंजाइल अल्कोहल यूज टू ट्रीट द हेड लाइस। बेंजाइल अल्कोहल टॉपिकल इज़ फॉर ट्रीटिंग हेड लाइस ओनली। अगर टॉपिकली बात करें तो आपका जो बेंजाइल अल्कोहल है वो टॉपिकली यूज़ होता है। टॉपिकल मतलब जो सिर्फ बाहर से यूज़ होते हैं, अप्लाई करते हैं, स्किन को ऊपर से अप्लाई करते हैं, जिनको हम इंड्यूस नहीं करते हैं, उनका उसको एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, चाहे वो ओरली हो चाहे वो किसी भी तरह हो, इंजेक्टिवली हो, वो नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर स्किन से ही अप्लाई करते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं ये टॉपिकल एजेंट्स कहलाते हैं। तो बेंजाइल अल्कोहल इज़ यूज्ड एज अ टॉपिकल एजेंट फॉर द स्किन मेडिकेशन. It is used as an anti-parasite medication. It is used in to treat the head lice to people between the ages of 6 months and 60 years old. Benzyl alcohol topically is used for treat the head lice only. Now the glycerol. The next structure is glycerol. Glycerol is the trihydric alcohol. इन देयर अगर हम टाइप्स की बात करें तो ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, बिकॉज इन देयर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी प्रेजेंट। जब हमने टाइप्स देखे थे तो उसमें हमने देखा था ये
कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, this carbon, this carbon, this carbon. Okay, so this is trihydric alcohol, CH2 CHOH CH2OH. This is the formula of glycerol, CH2OH CHOH CH2OH. Uses. Glycerol is the most commonly used for constipation, improving hydration and skin performance in athletes and for certain skin conditions. So the glycerol is always used for the constipation purpose, improving अगर कॉन्स्टिपेशन है तो क्या कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब कम हो जाता है ना, वो वाटर सप्लाई कम हो जाती है, तो उसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है. सो जो ग्लिसरॉल होता है वो इम्प्रूव करता है हाइड्रेशन को, जिससे कॉन्स्टिपेशन रिमूव हो मतलब कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है. एंड परफॉर्मेंस इन एथलीट्स एंड फॉर द सर्टेन स्किन कंडीशन, कुछ स्किन मेडिकेशंस में भी यूज़ होता है ग्लिसरॉल का. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर meningitis, stroke, obesity, ear infections and other conditions, but there is no good specific evidence to support these uses. ये बहुत और भी चीज़ों में ग्लिसरॉल यूज़ होता है, जैसे कि meningitis, stroke, obesity, ear infection, लेकिन इनका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए कोई सपोर्ट, कोई एग्जाम्पल प्रॉपर नहीं है which is evident to support these uses. Next is propylene glycol. Propylene glycol is the type of dihydroxy alcohol because in there 2 hydroxy group are present, 1 2. Okay, so it is 1 carbon, this 2. So this is the structure of propylene glycol. Okay, CH CH3 OH CH2 OH. Uses of the propylene glycol. Propylene glycol is the dihydric alcohol because 2 hydroxy group are present. It is used to absorb extra water and maintain moisture in certain medicines, cosmetic and food products. So propylene glycol to absorb the extra water को absorb कर लेगा तो क्या होगा, मॉइस्चर को रिमूव कर देगा, तो मॉइस्चर को मेंटेन करता है इन सर्टेन मेडिसिन्स में, कॉस्मेटिक्स में और फूड प्रोडक्ट्स में. तो हम इसको मॉइस्चरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं प्रोपाइल ग्लाइकॉल को, जो मॉइस्चर को मेंटेन कर देता है. मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर, मॉइस्चर में क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर ही तो आ जाता है किसी भी कंपाउंड में, तो उसको प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल रिमूव कर देता है. इट इज़ अ सॉल्वेंट फॉर फूड कलर्स एंड फ्लेवर्स, और सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है फॉर द कलरिंग द फूड मटेरियल एज अ फ्लेवर्स एंड इन द पेंट्स एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज. Propylene glycol is also used to create artificial smoke or fog used in firefighting training and theatrical productions. So sometimes propylene glycol is used to create artificial smoke, which is used in firefighting training as a fog and in theatrical productions. So these are the examples, these are the derivatives which are used as a derivative of alcohols and in their alcoholic group are present. So हम फिर से एक बार देख लेते हैं सारा कि कौन कौन से examples हमने देखे which is used as a derivative of alcohol. Ethyl alcohol. Ethyl alcohol is the derivative of alcohol. In there ethane is hydrogen of ethane is replaced from the hydroxyl group and form the ethyl alcohol, CH3 CH2 OH.
and the main use of ethyl alcohol is it is used to uh, as a solvent, and it is used in the beverages, because ethyl alcohol is a drinking alcohol and which is used in beer and wines. Okay. And other preparations of the medicines of the as a solvent, ethyl alcohol is used as a flavoring agent, it is used as a disinfectant, it is used as a tincture of iodine in many medicines and drugs. It is also used as a fuel and gasoline additives. Next, methyl alcohol. Methyl alcohol is used as methyl alcohol, the structure of the methyl alcohol is CH3OH. When methane, hydrogen of the methane is replaced from the by the hydroxyl group, so the CH3OH will be formed. This is the structure of the methyl alcohol or methanol. Methanol is basically used as a solvent, as a fuel, as an antifreeze agent, because it has an antifreeze property. It is polar in nature and miscible with water. It is in liquid at a room temperature. So, and the very best example of the alcohol of methyl alcohol and ethyl alcohol. Next is chlorobutanol. Chlorobutanol is the other derivative of the alcohol in their chloro group, and the hydroxyl group is present in the with the alkane and form the chlorobutanol. The uses of the chlorobutanol: chlorobutanol has a antimicrobial property. It is used as a antibacterial agent, antifungal agent, because it has a antibacterial and antifungal properties. The concentration of 0.5% use of the chlorobutanol, which is stable for a long time to multi ingredient formulations. So, and retains antimicrobial activity at 0.05% in water. Chlorobutanol has been used in anesthesia and euthanasia of invertebrates and fishes. Next is cetoestearyl alcohol. Cetoestearyl alcohol is also the derivative of the alcohol. It is the polyalkane alcohols, because in their polycarbon chain will be attached with the hydroxyl group. We will see the structure. There are one methyl group, 14 carbon chain, and then carbon is attached with the hydroxyl group. So, this is the polycarbon alcohol. Uses: used to need as a it is used as a emulsion stabilizer. It is used for both oil in water emulsion, water in oil emulsion, as a stabilizer, opacifying agent, foam boosting surfactant, and as a emollient. Now, the benzyl alcohol. Benzyl alcohol in their carbon atom is attached with the aromatic ring, that is benzene. That carbon is directly attached with the hydroxyl group. This is benzyl alcohol. Benzyl alcohol is topically used as for the skin medication. It is used as an anti-parasite medication. It is used to as a topically, it is used to treat the head lice in people between the ages of 6 months and 60 years old. Now, the structure of the glycerol. Glycerol is used, glycerol is the trihydric alcohol, because in their structure 3 hydroxyl group is present. The formula is CH2OH, CHOH, CH2OH. Now, the uses of the glycerol. Glycerol is most commonly used for the constipation, because it is improving the hydration process. So, after the improvement of the hydration process, constipation will be removed and the performance in athletes and for certain skin conditions. It is also used for the meningitis, stroke, obesity, ear infections and other conditions, but there is no good scientific evidence to support these types of uses. Now, the structure of propylene glycol. Propylene glycol is the structure of dihydric alcohol, because in there 2 hydroxyl group is present.
The structure is propylene glycol is CHOH CH3 CH2OH. This is propylene glycol, and this is the structure of dihydric alcohol. Uses it is used to absorb the extra water and maintain the moisture, because it remove the extra water, तो absorb कर लेगा extra water को, so moisture will be removed from the medicine, from the cosmetic and from the food products, and it is used as a solvent for the food colors and flavors and in the paints and plastic industries. Thank you.